Hare Krishna, Dandavat Pranam to all devotees. Welcome to our Saturday online Bhagavad Gita discussion. Today's shloka is the 8.28, and we'll start from the Radha Mother. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Yashodhanandana Braja Janaranjan Yashodhanandana Braja Janaranjan Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Ya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Yashodhanandana Braja Janaranjan Yashodhanandana Braja Janaranjan Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Yashoda Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodhanandana Braja Janaranjan Yashodhanandana Braja Janaranjan Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Hare Ram Sankirtan ki jai, Jai Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanande. हरे कृष्ण प्रभु। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के साप्ताहिक शनिवार के संध्याकालीन सत्र में। लाइक टू वेलकम ऑल द डिवोटीज फॉर टुडेज इवनिंग भगवद गीता स्टडी प्रोग्राम एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव विद अस हिज ग्रेस असीमानंद। तो ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आज पुनः एक बार हमें श्रीमान असीमान कृष्ण प्रभु श्रवण करने का अवसर। एंड वी ऑल आर अवेयर दैट whenever we get an opportunity to hear from Prabhu, it's a wonderful good fortune actually. तो हम सबका ये परम सौभाग्य होता है, ये बहुत अच्छा अवसर होता है ऐसे भक्तों से श्रवण करना जो स्वयं इस भक्ति योग के पथ पर बहुत गंभीरता से अग्रसर हैं, बहुत गंभीरता से जो मुख्य अंग हैं भक्ति योग के श्रवण कीर्तन उसमें, तो ऐसे भक्तों से श्रवण करना ये बहुत लाभान्वित होता है हम सभी के लिए। ये जो पूरी परंपरा हमारी है वो इसी प्रकार से है कि जीवन सार्थक कर ही करा परोपकार। पहले खुद इसको अपनाना अच्छे से और फिर दूसरों को इसके बारे में बताना। तो असीमान कृष्ण प्रभु जी ऐसे एक भक्त हैं जो हम सब जानते हैं कि वो उनकी श्रवण में बहुत रुचि है और उतनी ही गंभीरता से वो कीर्तन भी करते हैं, प्रातःकालीन अपना जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। और आप सबने ध्यान दिया होगा तो पिछले मैं कई वर्षों से प्रभु से श्रवण कर रहा हूँ। he sings in only one tune, this राधा माधव हरे कृष्ण महामंत्र। तो उनका बहुत लगन है देखिए भगवान के नाम के प्रति, और सुबह का प्रातःकालीन जप करना और श्रवण के लिए जहां जहां पर कार्यक्रम होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा कहीं पर उनको अगर युक्ति नहीं है तो निश्चित रूप से आते हैं। कई बार तो ऑफिस के ड्रेस में वो आते हैं, देखा मैंने, श्रवण करने के लिए जैसे भी उनको समय मिलता है। तो ये जो रुचि है, ये जो लौल्यम है, ये ऐसे भक्तों से हमको सीखने को मिलता है सदैव। जब भी उनका संग प्राप्त होता है हम बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो हम सब मिलकर प्रभु जी का स्वागत करेंगे आज की क्लास के लिए 8वें अध्याय के 28वें श्लोक पर। ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। तो हम सब मिलकर प्रभु जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और कोई भक्त जो आज पहली बार आए हैं तो उनका भी स्वागत है आज। हरे कृष्ण। प्लीज प्रभु। हरे कृष्ण। Pranam. Hare Krishna again. Welcome to all the devotees. Also, thanks for giving me an opportunity to glorify this verse. Even I am not qualified or I'm not attending most of the classes nowadays here in the online, but still thank you for giving me an opportunity, Prabhuji. Especially Arjun Prabhuji, Prakash Prabhuji, Shumati Prabhuji. Thank you. I will try my best to whatever I heard, I learn from the
different ISKCON devotees, Srila Prabhupada's purport. I will try to glorify this verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirai Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktarunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Lead shloka. Hare Krishna, Bhagavad Gita as it is, chapter number 8, Attaining the Supreme, shloka number 28, 8.28. Vedeshu yajneshu tapassu chaiva dhaneshu yat punya phalam pradishtam atyeti tat sarvam idam viditva yogi param sthanam upaiti chadyam Vedeshu yajneshu tapaschaiva dhaneshu yat punya phalam pradishtam Atyeti tat sarvam idam viditva yogi param sthanam upaiti chadhyam Vedeshu yajneshu tapastu chaiva dhaneshu yat punya phalam pradishtam Atyeti tat sarvam idam viditva yogi param sthanam upaiti chadhyam. Hare Krishna, Prabhuji, can... Yes, Prabhuji. Vedeshu yajneshu tapasu chaivadaneshu yat punya phalam pradishtam atteti tattva sarvam idam viditva yogi param sthanam upayati chadyam. Hare Krishna, word to word meaning. Vedeshu, in the study of the Vedas, Yajneshu, in the performance of yajna, sacrifice, Tapassu, in undergoing different types of austerities, Cha also, Eva certainly, Dhaneshu, in giving charities, Yad that which, Punya phalam, result of pious work, Pradishtam, indicated, Atyeti, surpasses, Tat sarvam, all those, Idam, this, Viditva, knowing, Yogi, the devotee, Param, supreme, Sthanam, abode, Upaiti, achieves, Cha also, Adyam, original. Translation and purport by His Divine Grace, Abhacharna Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: a person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all this, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. Purport, it is a quite long purport. This verse is the summation of the 7th and 8th chapters, which particularly deal with Krishna consciousness and devotional service. One has to study the Vedas under the guidance of the spiritual master and undergo many austerities and penance while living under his care. A brahmachari has to live in the home of the spiritual master just like a servant, and he must beg alms from door to door and bring them to the spiritual master. He takes food only under the master's order, and if the master neglects to call the student for food that day, the student fasts.
These are some of the Vedic principles of the observing brahmacharya. After the student studies the Vedas under the master of some time, at least from age 5 to 20, he becomes a man of perfect character. Study of Vedas is not meant for the recreation of armchair speculators, but for the formation of character. After this training, the brahmachari is allowed to enter into household life and marry. When he is a householder, he has to perform many sacrifices so that he may achieve further enlightenment. He must also give charity according to the country, time, and candidate, discriminating among charity in goodness, in passion, and in ignorance, as described in Bhagavad Gita. Thereafter, retiring from household life, upon accepting the order of Vanaprastha, he undergoes severe penance, living in forest, dressing with the tree bark, not shaving, etc. By carrying out the orders of brahmacharya, householder life, vanaprastha, and finally sannyasa, one becomes elevated to the perfectional stage of life. Some are then elevated to the heavenly kingdom, and then they become even more advanced. They are liberated in the spiritual sky, either in the impersonal Brahmajyoti or in the Vaikuntha planets or Krishna Loka. This is the path outlined by Vedic literature. The beauty of Krishna consciousness, however, is that by one stroke, by engaging in devotional service, one can surpass all the rituals of the different orders of life. The word idam viditva indicate that one should understand the instruction given by Sri Krishna in this chapter and the 7th chapter of Bhagavad Gita. One should try to understand these chapters not by scholarship or mental speculation, but by hearing them in association with the devotees. Chapters 7 through 12 are the essence of Bhagavad Gita. The first 6 and the last 6 chapters are like covering for the middle 6 chapters, which are especially protected by the Lord. If one is fortunate enough to understand Bhagavad Gita, especially these middle 6 chapters, in the association of devotees, then his life at once become glorified beyond all penance, sacrifice, charities, speculation, etc. For one can achieve all the results of these activities simply by Krishna consciousness. One who has a little faith in Bhagavad Gita should learn Bhagavad Gita from a devotee. Because in the beginning of the 4th chapter, it is stated clearly that Bhagavad Gita can be understood only by devotees. No one else can perfectly understand the purpose of Bhagavad Gita. One should therefore learn Bhagavad Gita from a devotee of Krishna, not from mental speculators. This is a sign of faith. When one searches for a devotee and fortunately get a devotee's association, one actually begins to study and understand Bhagavad Gita. By advancement in the association of the devotee, one is placed in devotional service. And this service dispels all one's misgiving about Krishna or God and Krishna's activities, form, pastimes, name, and other features. After these misgivings have been perfectly cleared away, one becomes fixed in one's study. Then one releases the study of Bhagavad Gita and attains the stage of feeling always Krishna conscious. In the advanced stage, one falls completely in love with Krishna. This highest perfectional stage of life enables the devotee to be transferred to Krishna's abode in spiritual sky, Golok Vrindavan, where the devotee becomes eternally happy. Thus end the Bhakti Vedanta purport to the 8th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of attaining the Supreme. Hare Krishna. You can Hindi. Yes, sir. हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिपाद स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है।
मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विशेष आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता तथा मनोधर्म से या इन दोनों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इस मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवद गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवद गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है, और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर होने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। अब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यस प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. My humble obeisances to all the assembled Vaishnava devotees. Thank you for giving me an opportunity. And this chapter, we all studied almost 27 shlokas. And now it is last shloka where Krishna is concluding this chapter, attaining the Supreme. Where Arjuna asked initially 8 questions. And Krishna explains, answers 7 questions in the first 2 verses, like third and fourth. Then whole chapter he kept for the one question. That question is that, how can those engaged in devotional service know you at the time of death? Who is in the devotional service, how he know during his death? That's what whole chapter, almost remaining shlokas, Krishna is explaining about that point. Means so important point what Krishna is explaining. All other points also important, but this point is so important that devotees who are engaged in devotional service at the time of death, what they have to do. What Krishna is completely explaining the process of this, answering the question number 8. हरे कृष्णा। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और मैं भक्तों का बहुत आभारी हूँ कि मुझे सेवा दी गई है। और हम लोग 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, इसका नाम है भगवत प्राप्ति। हम लोग 27 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और आज अंतिम श्लोक भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर निष्कर्ष रूप में ये श्लोक दे रहे हैं। शुरुआत के आरंभ में श्लोकों में 8 प्रश्न पूछे गए 2 श्लोकों में, और तीसरे चौथे श्लोक में 7 प्रश्नों के उत्तर दिए गए जो अर्जुन द्वारा पूछे गए थे, भगवान कृष्ण के द्वारा उत्तर दिए गए। और 8वां जो प्रश्न था कि जो अंत समय में ये अध्यात्म जो है, जब प्राण छूटते समय जब शरीर त्यागते हैं तो उस समय कैसे भगवत चेतना से युक्त हुआ जाए जिससे कि भगवत प्राप्ति हो सके, उसका उत्तर ये पूरा अध्याय है। And this shloka, actually Krishna is saying that the purpose of all Vedic instructions is to achieve the ultimate goal of life, to go back to Godhead. और यहाँ बता रहे हैं भगवान कि वेदों का अध्ययन का पूरा जो निष्कर्ष है वो क्या है, भगवत धाम को वापस जाना। Actually different process Krishna explained. Even Krishna explained in Bhakti Yoga, like in the shloka number, remembering Krishna at the time of death, he 8.5 to 8.8, 8.9 to 8.1. Remembering Krishna, practice remembering through the meditation. Shloka number 8.14 to 8.6, Krishna explains pure devotional service, remembering Krishna through the bhakti. Then again, 17 to 22, Krishna explained the glories of his abode, because we have to understand that once we are going back to supreme abode, that glories also Krishna explains. And then 27 to 28, Krishna explains, ending with the again, and he will explain this last 2 shlokas again Bhakti Yoga. तो भगवान शुरुआत में 8वें अध्याय में जो है वो ये वर्णन करते हैं किस प्रकार से जो प्रश्न पूछे गए शुरुआत में, और फिर अंत समय में कैसे भगवान को स्मरण किया जाए, तो 5 से लेकर के 8 श्लोक तक, और फिर उसके पश्चात 9 से लेके जो श्लोक आगे बढ़ते हैं उसमें कैसे योग के द्वारा भगवान को स्मरण कर सकते हैं, और फिर 14वें श्लोक से कैसे हम लोग शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, वो बताया गया। और अब यहाँ पर इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे गति होती है
इस श्लोक के पहले 3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में, कि किस समय लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो कैसे भगवान का स्मरण हो पाता है या कहाँ पर उनको जाने को प्राप्ति होती है, किस समय, किस समय और किस प्रकार की चेतना से युक्त होकर जब शरीर छोड़ते हैं वो, तो उनको उनका गंतव्य स्थान क्या होता है, ये बताया गया। Even like studying the Vedas or performing sacrifice, undergoing austerity, giving charity, pursuing philosophical or fruity activities, and then all this what is for finally we have to understand all this process as that to attaining the supreme. But if we are not for understanding that goal, if we may miss this goal, then means our human life, it is wasted. It is, that's what, if whoever studying the Vedas, all this process, if it is missed, it is missed, it is a problem. Because in the human life, what you taken as a human, it is a rare chance where we are getting, and we lost that opportunity. But in the Bhakti Yoga, we'll get all this, whatever we are achieving from Bhakti Yoga is Prabhupada is explaining. It is a, Prabhupada is clearly writing, the beauty of Krishna consciousness, however, is that one stroke, by engaging in devotional service, one can surpass all the rituals of the different orders of the life. Means one stroke, we can, in the Bhakti Yoga, we can get everything. जैसे यहाँ पर बताया गया कि वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म, तो ये सभी का अंततः फल जो है वो भगवत प्राप्ति है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से हमारा मनुष्य जीवन जो बहुत दुर्लभ है उसको हमने व्यर्थ कमा दिया। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सभी का फल केवल कृष्ण भावनामृत में एक झटके प्रभुपाद देते हैं यहाँ पर, कि कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि बाकी सभी जो ऐसे जो वेदों में वर्णित कार्य बताए गए हैं, जैसे कि वेदाध्ययन करना, तपस्या, दान, ये सारे कार्यों का फल मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने से उनको सभी अनुष्ठानों को पार कर जाते हैं। And Prabhupada is clearly explaining, in his purport, that path of Vedic literature, how path of literature, he is explaining brahmacharya, and he is explaining householder life, means grahastha ashram. Prabhupada explained vanaprastha ashram, which is retired life, and then finally sannyasa. So Prabhupada is really explained first 2 verses, this complete वर्णाश्रम धर्म he explains here. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी देखते हैं तो पूरा वर्णाश्रम धर्म को पूरा यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं कि कैसे शुरुआत में गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना, उसके पश्चात वो गृह जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, और उसके पश्चात वानप्रस्थ और तत्पश्चात संन्यास, और किस प्रकार से इसका पूरा उद्देश्य क्या है कि कैसे वो भगवत प्राप्ति करें जीवन की। Prabhupada is writing some because after doing all these things, some are elevated to the heavenly kingdom, and when they become even more advanced, they are liberated to the spiritual sky, either in personal Brahma Jyoti or in Vaikuntha planets or Krishna Loka. This is the path outlined in the Vedic literature. This is what explaining here. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि इनमें से कुछ लोग स्वर्ग लोक को जाते हैं, और यदि वे अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त की जाती है। Normally what happens, when so religious people generally do not know that the highest perfection of religion is the attainment of devotional service. तो समान लोग ये नहीं जानते हैं कि मनुष्य जीवन की सिद्धावस्था वो भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा में युक्त होना है। That's what here it is telling, Vedeshu, Yajneshu, Tapaseshu. Generally, Vedic knowledge is required for self-realization. जैसे यहाँ पर बताया गया कि वेदेषु, यज्ञेषु, तपस्सु, तो विशेष रूप से ये जो आत्म साक्षात्कार के लिए वेदों का ज्ञान आवश्यक होता है। But we can see, in the history, like in our scriptures, like Narad, he never went to school of the spiritual master or of his spiritual master, or he did not educated in Sanskrit or Vedic principles, but he also acquired highest results of Vedic study. लेकिन हम देखें तो नारद मुनि जो हैं, उनकी जब कथा हम लोग सुनते हैं कैसे वो जो आया पुत्र थे, तो वो तो कभी गुरुकुल में भी नहीं गए और वेदों का अध्ययन भी नहीं करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, लेकिन हम सुनते हैं कि किस प्रकार से उनको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो गई।
because this process of Bhakti Yoga, that's what here in this Krishna is telling, is so potent that even without performing the religious process regularly, one can rise to the highest perfection. क्योंकि ये प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो भक्ति पथ का मार्ग है, जैसे नारद जी वो भक्ति वेदांतियों के संपर्क में आकर उनकी सेवा से उनका उच्चिष्ट प्राप्त करके और भक्ति योग का विधान का पालन करके एकदम सर्वोच्च अवस्था में पहुंच गए, ये सारी स्थितियों को पार कर लिया उन्होंने, वेद तप आदि को पार कर लिया. Yes, that's what like Narad, he is associated with the Vedantis, and he was hearing, he was honoring their Uchishta, means Maha Prasadam. And once he is means very faithfully he was hearing from them and doing that process and under the guidance of this Vedantis, and he achieved that perfection. तो हम देख सकते हैं कि बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया ये नारद जी के स्वयं के जीवन से कि कैसे उन्होंने भक्ति वेदांतियों की सेवा करके उनकी आज्ञा से उनके उच्चिष्ट को प्राप्त करके गंभीरता पूर्वक उनसे श्रवण करके वो कम ही आयु में वो सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लिए, जो ये सब तपस्या और वेद अध्ययन करके तपह करके प्राप्त की जाती है. That's what we can understand. One whose association with the great acharyas, or one is even if he is not educated, he has never studied Vedas, but still he can familiar with all the knowledge necessary for the self-realization. तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा में युक्त होकर के जब वो भक्ति योग के विधान का पालन करते हैं तो उनको सारा जो सर्वोच्च ज्ञान है, वेदों का जो सार है, वो उनको पूरा निष्कर्ष ज्ञात हो जाता है, सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं. That's what this here in this also this point is very importantly it is stressing in this verse, that all this Vedic literature, whatever we are studying, we get the perfection, but if we are, that's what I initially told, if we lost that goal, then it is needs self-realization is not possible. इसीलिए जो उद्देश्य है वो हमको बहुत साफ साफ समझ में आना चाहिए कि वेदों के अध्ययन का उद्देश्य, तपस्या का उद्देश्य, ये सभी जो विधि हैं, जो योग हैं, इनका उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति करना. ये बहुत आवश्यक है मैं समझता. Because even it is many places, other places also it is glorified. Even in Brahma Samhita also it is glorified as Advaitam Achyutam Anadim Ananta Rupam Adyam Purana Purusham Nava Yavanam cha. But Vedesha Durlabam Adurlambam Atma Bhakto Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami, means Vedesha Durlabam. We even just studying the Vedas, we are unable to get that understanding of the Lord, but only through the devotee. If once we are studying this Vedic literature or about Krishna, through surrendering to a guru or a association with a spiritual master or association with the devotees, we'll understand the this science of self-realization, or who is Supreme Personality of Godhead, Krishna, or his name, fame, everything we can be understand. Not just studying ourselves or speculating. It is not possible. इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से, जैसे अभी प्रभु ने बताया कि ब्रह्म संहिता में बताया गया कि भगवान के बारे में वेद से भी समझना दुर्लभ है, लेकिन भक्तों के माध्यम से, भक्तों की सेवा से, भक्तों के संग में, प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं तात्पर्य में भी कि भक्त की संगति में ही इसको भली भांति समझना चाहिए. ये पूरा इसका अध्ययन और अध्ययन का उद्देश्य भगवान की सेवा में युक्त होना, भगवान को समझना, उनकी सेवा में युक्त होना, उनको प्रेम करना, ये सब हमको भक्तों के संग में ही समझ में आता है. That's what even Prabhupada is writing. This shloka is the summary shloka for the shloka number chapter number 7th and 8th. तो इसलिए 7वें और 8वें अध्याय में ये बताया जा रहा है. यस प्रभु. That means it is like this. This verse is the summation of the 7th and 8th chapter, which is particularly deal with the Krishna consciousness and devotional service. ये श्लोक जो है वो 7वें और 8वें अध्याय का पूरा निष्कर्ष है, ये जो कि अंततः भगवान की शुद्ध भक्ति में ही युक्त होता है. Yeah, because next chapter it is where it is this confidential knowledge, which is pure bhakti was explained there. That's what it is a platform for next shloka, as well as it is summation for the 7th and 8th chapter.
तो ये 7वें 8वें अध्याय का ये निष्कर्ष रूप में श्लोक है, जो कि 9वें अध्याय जो राज विद्या आने वाला है, उसको अध्याय का ये आधार इसका बना रहे हैं यहाँ पर. Because even that's what Prabhupada in the he explained that Prabhupada explained that we have to hear or we have to study this Bhagavad Gita or Bhagavad Gita through association of the devotees, and then only we understand the purpose of the Bhagavad Gita. प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शास्त्र हमको भगवान के भक्तों के संग में ही अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हमें ये ज्ञान समझ में आता है. And Prabhupada even explained that middle 6 chapter is the Bhakti Yoga, and that is Karma Yoga and Jnana Yoga. First 6 chapter is Karma Yoga and middle is Bhakti Yoga, and it is Jnana Yoga. And Krishna is kept in the center with the center of the Bhakti Yoga. और प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे शुरुआत के 6 अध्याय कर्म योग, अंत के 6 अध्याय ज्ञान योग, और बीच में ये भक्ति योग को बहुत सुरक्षित करके भगवान इसको रखे हैं. That's what Prabhupada is writing. We have to study this chapter with the association of the devotee with scrutinizingly. Then only we understand that. और भगवान बार-बार, प्रभुपाद जी बार-बार यहाँ पर कहते हैं, ये हमको भक्तों के संग में बड़ी सूक्ष्मता के साथ में अध्ययन करना चाहिए. And hearing from them, associating with them, that is the very, very important part of the devotional service. तो जब भक्त की संगति में हम आते हैं और भक्तों की संगति में अध्ययन करते हैं, तब जाकर के हम भगवान के कार्यकलाप, उनके नाम रूप को समझ पाते हैं. That's what Prabhupada is writing. If one is fortunate enough to understand Bhagavad Gita, especially this middle 6 chapter, in the association of devotees, then his life at once become glorified beyond all penance, sacrifice, charity, speculation, etc. For one can achieve all this result of these activities simply by Krishna consciousness. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा. केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है. That's what this devotional service is Prabhupada writing. No, it is very, devotional service is a very happy one. No? And it is Susukam. And why? Because devotional service is consist of Shravanam, Kirtanam, and Vishnu's. Means one has to simply, we have to hear and chanting the glories of the Lord, or can attend the philosophical lectures on the transcendental knowledge given by authorized acharyas. तो इससे कहते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि ये बड़े ही सुखपूर्वक इसको किया जाता है, क्योंकि ये जो भक्तिमय जो सेवा होती है वो श्रवण, कीर्तन और इसको सिद्धांत को समझ करके और जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके अनुगत्य में ये करना होता है, तो बड़े सुखपूर्वक ये कार्य होता है. Same like Narad also same. He was just eating the remnants of the food of this one, and he just hearing from the Vedantis, and he attained the supreme goal. जैसे कि नारद मुनि ने किया, उन्होंने कि उन भक्ति वेदांतियों के आश्रय में उनके सेवा करके, उनके शिष्ट को प्राप्त करके, उनसे श्रवण करके उन्होंने सर्वोच्च गति प्राप्त की. Prabhupada even says devotional service is a very this in every state devotional service is joyful. प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक अवस्था में भक्ति में सेवा ये बड़ी सुसुखम पूर्वक की जाती है. Because it is very simple to execute. We can see actually with Shravanam Kirtanam, just to hear from the acharyas, from the association of devotees. Even if you don't have chance, even we have Srila Prabhupada's books, we can read. We have Srila Prabhupada's lectures. It's very simple. You just read or hear, and then even with the association study, and this one is, it is very simple process. तो ये बड़ा सहज इसको बताया गया है और इसको बहुत गंभीरता से करना चाहिए. है सहज पथ. ये क्या करना है? श्रवण करना है, कीर्तन करना है. प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, प्रभुपाद जी को श्रवण करना, प्रभुपाद जी की वाणी को श्रवण करना. तो ये सहज मार्ग है श्रवण कीर्तन के द्वारा. And Prabhupada further says one can execute devotional service even in the most poor stricken condition. Means even a poorest person also, because he can, and because Krishna is telling patram pushpam phalam toyam, because very, very simple items where we can get it, because this is in the life we needed all these things, patram phalam pushpam. It is very easily available, that simple things we can offer to the Krishna,
and become a devotee of the Krishna. और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी भगवान को पत्रम पुष्पम फलम, कम से कम एक गिलास पानी ही ऑफर कर सकते हैं तुलसी जल डाल करके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी इसको कर सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत धनाढ्य या कोई वैभव की आवश्यकता नहीं है। Like even a leaf, a flower, bit of fruit, water, which are available in every part of the world. Prabhupada, these words I am telling, can be offered by any person, regardless of social position, and will be accepted if offered with love. प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी अवस्था में कोई भी इसको दुनिया के किसी भी भाग में ये सेवा कर सकते हैं, भगवान को पत्रम पुष्पम फलम, चाहे किस भी सामाजिक अवस्था में वो स्थित हो, और प्रेम से भक्ति में सेवा के द्वारा भगवान को अर्पित कर सकते हैं। Means that's why because this devotional service is very, very simple. Like, you know, if we may sometimes we feels like we not study Vedic literatures or some truth because we need some to study all these things. But Prabhupada made this process very simple because he transferred all this Vedic literature into simply understanding in English, where because English is the dominated language at present world, and he just given for us to just understand. We no need to read all this Vedic literature. No need. Just read his books. We can understand the whole devotional service. तो प्रभुपाद जी ने ऐसे ही हमको ये ज्ञान दिया कि अगर जैसे वेदों का अध्ययन करना हो तो सबके लिए संभव नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने इसको अनुवादित कर दिया है अंग्रेजी भाषा में, जो कि पूरे विश्व में बहुत ज्यादा प्रचलन में है, और प्रभुपाद जी की शिष्यों की कृपा से सभी भाषाओं में अभी हो चुका है अनुवाद। तो सब लोग प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ करके पूरे वैदिक साहित्यों का जो सार है वो हम समझ सकते हैं। And Prabhupada is right. Is in the last paragraph, Prabhupada is explaining Navavidha Bhakti. और अंत वाले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी नवधा विधि के बारे में बता रहे हैं। But Prabhupada has telling one has a little faith in Bhagavad Gita should learn Bhagavad Gita from a devotee. प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसको भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए। Means faith is the very, very important factor in the devotional service. तो श्रद्धा बड़ा महत्वपूर्ण अंग है भक्ति में सेवा में। Because initially our faith is very, very fragile. Means we have some doubts or something, you know, some purpose or something to gain. We'll go to the associating with the devotees. But that is very, very fragile. Means we don't know bhakti that much earlier. That's what it is called. It's a very, very fragile state. तो आरंभ में हमारी भक्ति में जो श्रद्धा होती है बड़ी ओछल होती है। That's what this like faith is very, very, like, you know, even sometimes there's speculators or just to study the Vedas for their daily purpose, daily living purpose or something like that. Then they even this we can see many people in India also. They give nice lectures, nice things, but they really don't have faith. कई बार हम देखते हैं कि लोग भगवत कथा के वाचक बन जाते हैं, कथा बेचक बन जाते हैं, कथा को बेचते भी हैं, वो लोग कथा करते हैं, बड़े बड़े सप्ताह करते हैं, लेकिन उनका खुद की श्रद्धा भगवान के ऊपर, उनकी भक्ति में वो सेवा का भाव उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे कार्य करते हैं। You can one story was that it is to understand, which is in ISKCON Desire Tree. I was once reading for children class. It's stories like that because in one area there was one Brahmana who is like Vedas. He is very learned Vedantist, and he was giving many classes. Many followers were there. They're coming, and he is giving nice class about these scriptures. Biomedical literatures, all he was giving. Even he was talking about Krishna also, and about Krishna, Bhagavad Gita, he was giving the classes. कोई बता रहे कि एक बार मैंने ISKCON Desire Tree पे एक कथा पढ़ी थी, बच्चों क्लास देने के लिए मैं अध्ययन कर रहा था, तो उसमें देखा कि बताया गया कि एक प्रकार एक वेदांतिस्ट थे, वो गांव-गांव में जाके कथा करते थे, उनके बहुत से अनुयायी थे और वो बहुत कथा करते थे, भागवतम में कथा करते थे, कृष्ण के बारे में भी बोला करते थे। But one milkmaid means milkwoman. She was bringing every day to milk because he was actually, his house was
next to one side of the river, and this milk woman was another side of the river. And every morning she brings the milk, because she is very, very poor woman. She bring the milk and sell to this Brahmana. तो रोज वो एक ग्वाल बाल जो है कन्या थी, वो लेके आती थी दूध, और वो नदी के इस पार उनका घर था, उस पार उसका घर था, तो नदी से पार करके आती थी, उनको दूध दिया करती थी. Yeah, because this Brahmana is early getting up, he doing his rituals and all, and sometimes this woman get late, because to crossing the river she has to catch a boat, and from boatman sometimes comes late, and early morning it is sometimes she having that problem, and house also she has a lot of other duties, and to come to him it is sometimes getting late. And then one time this Brahmana means who is having this Brahmana, he shouted this woman. He asked, why you poor people are like that, every day coming late, all this like this. Then this milk woman, woman was telling, yes, she's because sometime boatman is late. I have this. She was asking always, sorry, next time I will come. Then this Brahmana says, you all just why you can't just chant Krishna Krishna and cross over the river. तो कभी कभी उनको आने में देर हो जाया करती, क्योंकि कभी कभी नदी में पानी आ गया, कभी कभी बारिश हो रही थी, कभी कभी जो नाव वाले थे वो उस टाइम पे नहीं आते थे. तो जब कभी कभी देर होती थी तो ये ब्राह्मण जो है बड़े क्रोधित हुआ करते थे कि आप लोग क्यों ऐसे देर से आते हो. तो उन्हें बताया कि ये समस्या है. तो ब्राह्मण ने ऐसे बोल दिया कि भगवान का नाम जपो, बस सब ठीक हो जाएगा. भगवान का नाम जपते हुए आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी. भगवान का नाम जपते हुए आया करो. Yeah. Then she taken this very faithfully, this woman, and she went. And next day, morning she got up. She did all her duty when you fast, because one time if not reaching this Brahmana will not be buying the milk. And she come early morning. Boatman was not there, and she remembers this Brahmana's word, because she know that Brahmana is having lot of followers. He is giving everyday class. And he got that faith on that word, and she thought that, okay, why this? Because Krishna's name means she can cross over. She chant the holy Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Like that, she chanting, and she crossed the river, and she come to the Brahmana. So Brahmana was very, very surprised how she come today very early. तो दूसरे दिन जब गई वो स्त्री थी और वहां से जब दूध लेके आ रही थी, तो उसने सुबह सुबह नहीं आया था नाव वाला. तो उन्होंने वो ब्राह्मण के वाक्य को स्मरण किया और भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते हुए वो आ गई और पहुंच गई, और बहुत जल्दी आ गई. वहां पर वो जल्दी आ गई तो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्यचकित हो गए. ब्राह्मण कह रही इतनी जल्दी आज कैसे आ गई ये कन्या. And Brahmana is asking how you came. Then she told, yesterday you told I chanted Krishna's name and I crossed the bridge. But again he is telling, no, it is not possible. How it is just chanting the holy name, you cross over the bridge? No, this is not possible, because he don't have faith on the holy name. तो जब उन्होंने पूछा कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो उन्होंने बताया कि आज भी नावरा नहीं आया था, लेकिन आपने कल बताया था ना कि भगवान का नाम लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा. तो मैं भगवान का नाम लेते हुए आई और आराम से मुझे जल में स्थान मिल गया. मैं आगे मैं नदी पार करके आ गई. ब्राह्मण बोले ऐसे कैसे हो सकता है, केवल नाम लेके आ गए तुम बिना नाव वाले के साथ. मैंने कहा हाँ. तो ब्राह्मण को विश्वास नहीं था. See, that's what Brahmana is doing, all this Vedic, but that essence of the goal of this all literature is to understanding the Supreme Personality of God and Krishna. But he don't have faith. But now he started to, ask, no, it is, you are something wrong telling. I want to see. Now they go for the testing. And when woman, Brahmana also, he was with, silk dhoti, all these things. And he started to go to near to the river. And he has lot of fear now in his mind, because this woman actually taking Krishna's name, she started to walk on the water. She's really walking. This Brahmana is thinking about his dhoti, silk dhoti, maybe get wet, lot of other things. And he also, because she was calling, come, just chant the holy name and come. But when he started to come, he started to drown inside the river, and he got wet. But this woman started to cross over the river. This is the summary of this story is that, if you are reading studying all these Vedas also, if you don't have faith
on the Lord or the goal of this, if you are not getting, then again it is a waste of this study. तो उसके बाद जब वो साथ में ब्राह्मण बोले कि चलो अच्छा ऐसा हो गया, नाम से हो गया, चलो मुझे लेके चलो, मैं देखता हूँ। तो ब्राह्मण भी साथ में आए उनके साथ में, और वो फिर से नाम लेके नदी की ओर जाना शुरू कर दी, और वो जाते गई, नदी के ऊपर पानी में चल रही थी वो। तो ये ब्राह्मण बोले कि ब्राह्मण सोच रहे थे कि अब मैं भी जाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपनी सिल्क की धोती पहनी थी कि मेरी जो धोती है ये सिल्क की रेशम की धोती है, ये भीग जाएगी, ऐसा सोच रहे थे वो, और उनको पूर्ण विश्वास नहीं था। तो वो जैसे आगे बढ़ रहे थे वो डूबते जा रहे थे, और स्त्री आराम से पार करते हुए जा रही थी। तो ये पूरे कथा का ये सारांश ये है कि किस प्रकार से विश्वास, पूर्ण विश्वास इस विधि पर होना, पूर्ण विश्वास अपने उद्देश्य पर, भगवान के नाम के ऊपर, ये भक्तिमय के जो पथ हैं, जो अंग हैं, उन पर पूर्ण विश्वास होना। That's what bhakti start from that Navavidha bhakti starting from the Shraddha. That's what even we are seeing here. Even initially I told, even Narada's also example we are seeing, because you no need to study of the Vedas or Vedas if it is not required. But if you are very faithfully follow the instructions of the Lord and in the Krishna consciousness, you can be successful. तो इसलिए भक्ति की शुरुआत में देखते हैं कि श्रद्धा की बहुत आवश्यकता होती है, और देखा हमने किस प्रकार से नारद जी की भी हमने प्रभु से सुना कि नारद जी भी किस प्रकार से वो भक्ति में सेवा में युक्त होकर के बिना ये वेदों का अध्ययन तपस्या किए ही उनको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो गई। That's why Navavidha Bhakti start from the Shraddha. We enter to the Krishna consciousness, other devotees, we see the other devotees or some devotees will call us. Means we get some kripa from that devotee or some like that sort kripa from the sadhu. We or sadhu or some devotee. Devotee means he is a sadhu only, he will call, we enter to from that kripa we'll enter to the devotional service and we have that faith. And then second stage is sadhu sangha. Maybe when we come to this sangha of the devotees, we'll get sadhu sangha. From the sadhu sangha, our faith is further developing, and where we can learn from only qualified devotees, because they are very qualified, not from the mental speculators. These devotees are very, very qualified, very pure, and with association of them, our faith is further strengthening. तो हम सब देख सकते हैं किस प्रकार से जब भक्त लोग आते हैं इस अभियान में, तो श्रद्धा जब होती है उनकी शुरुआत में, आरंभिक श्रद्धा भक्तों के संग में आते हैं, भक्त लोग उनको धीमे धीमे भगवान के नाम अध्ययन में लगाते हैं जो योग्य भक्त हैं, और फिर धीमे धीमे अनर्थों की निवृत्ति होती है, और इस प्रकार से वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जो योग्य भक्त हैं उनसे श्रवण करना, उनकी सेवा में युक्त होना और उनसे मार्गदर्शन लेना। Prabhupada here right, when one searches for a devotee and fortunately gets a devotee's association, one actually begins to study and understand Bhagavad Gita. यहाँ पर लिखते हैं कि जब किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े, नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं जब भक्त की खोज होती है, अंततः भक्त की संगति प्राप्त की जाती है, तब जाकर के वो भगवद गीता का वास्तविक अध्ययन और उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। Then by advancement in the association of the devotee, one is placed in the devotional service, and this service dispels all one's misgiving about Krishna or God and Krishna's activity, form, pastimes, name and other features. और जब ऐसे उनको भगवान की संगति प्राप्त हो जाती है, तो भक्त की संगति से भक्ति आती है, और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। That is what bhajana kriya and anartha nivritti stage. तो ये भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति की अवस्था है। After these misgivings have been perfectly cleared away, one becomes fixed in one's study. That is nishtha, means firm faith. और इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। That is called firm faith, because once we are because initially we are in the fragile state, because somebody, even if it is non-devotees come and our brainwash, also we may leave the devotional service. But in this stage, because we are associated with the devotees and our anarthas, and we started to follow the devotional service, we started to do service to the Krishna or the devotees, and our faith will become very, very firm, fixed up faith. It's very nishtha, it is called nishtha.
तब जाकर निष्ठा भक्तों की स्थिर हो जाती है। शुरुआत में हो सकता है नहीं तो ऐसी अवस्था में अगर कोई ऐसे भी कुछ कह दे तो वो भक्ति छोड़ सकते हैं, लेकिन इस अवस्था में आने पर वो बिल्कुल एक निष्ठ हो जाते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। Then Prabhupada write, that is Ruchi and Asakti stage. Then one releases the study of Bhagavad Gita and attains the state of feeling always Krishna consciousness. और तब उसे भक्ति में भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। That is the Ruchi or Asakti stage. तो ये रुचि और आसक्ति की अवस्था है। And then in the advanced stage, one falls completely in love with Krishna. Falls completely in love with Krishna. That is highest perfectional stage. That is Bhava or Prema. Bhava and Prema. और अंत में वो आगे बढ़ने पर उनको कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाते हैं और यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिसको बताया गया कि ये भाव या प्रेम की अवस्था है। This highest perfectional stage of life enables the devotee to transfer to Krishna's abode in the spiritual sky, Golok Vrindavan, where the devotees become eternally happy. और यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिसमें भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होते हैं जहां पर वह नित्य सुखी रहते हैं। That is the, concluding Prabhupada this with this 8th chapter, because with the devotional service, this Navavidha Bhakti, when we are started to perform from Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, like each stage, our faith on the Lord is increasing, our love to the Krishna is increasing, our love to this devotional service is increasing. Then, at the end of this one, Anta Kale cha mamema paramukta kalevara, means we can, surely 100% we can remember the Lord, means we are attaining that state because our consciousness is full of Krishna consciousness at that point. तो इस प्रकार से श्रद्धा से लेकर के जब हम ये भक्तों का संग करते हैं तो भक्तों के संग में हमारी श्रद्धा बढ़ती रहती है, निष्ठा के स्तर पर आती है और पुनः फिर इस प्रकार से रुचि आ सकती है और भाव, और पूरी अवस्था में भक्तों के संग में जब हम इस प्रकार से युक्त होते हैं तब जाकर के हम प्रेम अवस्था तक पहुंच पाते हैं। Yeah, that is what this chapter is saying. Also, Prabhupada or even Chaitanya Mahaprabhu given us this process of chanting the holy name. Even this holy name is like that. It is when Kali Santrana Upanishad it is saying, Iti Shodaka Aksharam Namnam Kali Kalmasha Nasanam Nato Parataropaya Sarva Vedeshu Drishyate. Means Prabhupada is writing one point is that after searching through all Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna. तो इसी प्रकार से कलिशरण उपनिषद में बताया गया कि उपनिषद में कि किस प्रकार से भगवान का ये 16 शब्दों का जो नाम है ये इतना सर्वोपरि उपाय बताया गया कि इससे बड़ा उपाय और सारे वेदों में नहीं है इस कलयुग में, विशेष रूप से कलयुग के कल्मश को नाश करने के लिए। Yeah, that is the what summing up and ending of this one with means Sarva Vedeshu Drishyate, means all Vedic literature's final goal understanding. Even see Vedas, even our first heard is Brahmaji. Brahmaji only know Vedas. He know, but himself he is telling for the Kali Yuga is the Hare Krishna Mahamantra. This Mahamantra is the only way to become for the self-realization. और ब्रह्मा जी जो इस वेदों को जानते हैं वो खुद कह रहे हैं कलिशरण उपनिषद में कि वेदों में इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई 16 शब्दों का ये भगवान का जो पवित्र नाम है हरि महामंत्र जो इसका जप कीर्तन करते हैं, so just chanting this holy name is enough. Just chanting the holy name, we will be means chanting the holy name mainly with association of the devotees. We have to study Bhagavad Gita, Bhagavatam, because studying Bhagavad Gita or Bhagavatam has to be improve our quality of the chanting the holy name. तो भगवान का पवित्र नाम यही सर्वोपरि है। तो जब भक्तों के संग में हम आकर के भगवद गीता और भागवतम से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो ये हमारे जप और कीर्तन में हमारी रुचि आ सकती है और उसकी गुणवत्ता को और अच्छे से बढ़ाते हैं। Yeah, that is the what sum of this sum and substance of this shloka, because Bhakti Yoga is the supreme. That's what Lord is also glorifying. All the scriptures are literally describing. And in the Kali Yuga, Harinam is Nama Sankirtan Yajna is the supreme. And we all very, very fortunate here who all assembled. We all are chanting the holy name. And we all
and surely experiencing some joy. Surely I will tell, because many devotees will not express that our joyfulness. Surely everyone is getting eternally happiness. That is what, sure, it is the holy name is the, that's what Prabhupada is to chant and be happy. Surely everyone is getting all very, very fortunate. And thank you. This class I will stop here, discussing. तो भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं इस श्लोक में, और यही सार है श्लोक का। इस प्रकार से भक्तियों में भी हम सब जानते हैं कि विशेष रूप से भगवान के नाम का जप कीर्तन, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं में हम सबको ये भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अवसर दिया गया, कीर्तन करने का अवसर दिया गया। और निश्चित रूप से हम सभी भक्त जो भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लिए हैं, उनको निश्चित रूप से कुछ न कुछ अनुभूति और सुख की प्राप्ति हो रही होगी, चाहे वो उसको नहीं करना चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य है, जैसे बताया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सदा जप रहिए, जप करिए और प्रसन्न रहिए। तो निश्चित रूप से ये प्रदान कर भक्त लोग संकोच करते हैं कभी कभी, और विनम्रता के कारण इसको व्यक्त नहीं करते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, लेकिन सब लोग इसको अनुभव कर रहे होंगे। हरे कृष्णा। यहाँ पर विराम देते हैं। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji can add some points, Prabhuji. Thank you, Prabhu. So wonderful. Nicely we covered the entire purport of Sri Prabhupada with so much enthusiasm, and stressing on the Bhakti Yoga and especially on the Harinam, as always you do, Prabhu. So we are very grateful to you, Prabhuji. Prabhuji, all because I'm struggling, but getting, with all the association of all this congregation, Prabhuji. That is the only strength, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you. Always you. Thank you so much. तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से ये कथा हमें बताई आज के इस श्लोक के ऊपर, उसका सार क्या है और कैसे भक्ति योग फिर भगवान के नाम में परिणित होता है कलयुग में विशेष रूप से, और उसको जप करने का अवसर, कीर्तन करने का अवसर। इसका अर्थ है कि सभी वेद, सभी तपस्याओं, ये सब का परिणाम जो है वो हम प्राप्त कर चुके हैं, तब जाकर के ये भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आता है, ऐसा भागवत में भी बताया गया है। तो अगर किसी कोई जिज्ञासा हो आज के विषय पर, प्रभु वी कैन टेक सम क्वेश्चन विद योर परमिशन प्रभु जी, इफ इट इज देयर। तो किसी कोई जिज्ञासा हो आज के विषय पर तो आप अपने हाथ खड़े करें, तो आपको अनम्यूट कर सकते हैं हम लोग। बहुत सुंदर विषय वस्तु है। कोई भी भक्त की कोई जिज्ञासा, कोई शंका समाधान करना हो। Yashomatin Prabhuji, Rachogesh Prabhuji, if you want to add something or anything from your end. Hare Krishna, Prabhuji. No, Prabhu. As Prabhu, he covered the whole purport of Srila Prabhupada, like how Srila Prabhupada, he is considering this verse as base for the next chapter and essence of the last two chapters, 7th and 8th. So everything, all those points, Prabhuji, he already covered that, Prabhu. And as in the beginning, he mentioned it is like talking about the Varnashram Dharma and that all. So everything which is the subject here is covered by Prabhuji. So thank you so much, Prabhu. Thank you, Prabhu. So how beautifully Prabhupada summarized Prabhu in the purport, right? Yes. Yeah. Yes, in Krishna Bhakti, only one shot, you get everything. हिंदी में प्रभुपाद जी बोले एक में आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं. Yes. So it is Prabhu like these pure devotees, their conviction is so deep, Prabhu. Like Yes. any purport, any the topic, Srila Prabhupada, somehow he will connect it to the pure devotional service. Any subject. He is means he knows that how this topic is ultimately going to be connected to pure devotional service. Even from the first chapter itself, Srila Prabhupada, he talks about pure devotional service. Yes. So this is the mercy of these acharyas, and then only we are also little bit understanding of no, this is the importance of this pure devotional service, or this is the essence, because of it is stressed
each and everywhere in Srila Prabhupada purports. Everywhere it is stressed, and that's the reason we comes to that conclusion, and wherever any topic is there, Srila Prabhupada, he will connect it to pure devotional service. So otherwise like it will be very easy for us to deviate and think of like, no, there are many more topics, and maybe this all. So this is the mercy of the acharyas, how their purports, they are helping us. Thank you, Yes, Prabhuji. Prabhuji. And Prabhuji, very nicely, Prabhu, Asimananda Krishna, Prabhuji, very grateful to you, Prabhu. Very wonderfully you kept Yes, that right, Prabhuji. right from beginning, and very nicely focused. So thank you, Because Prabhuji. this from the all Srila Prabhupada's few lectures and other lectures which I heard from, and just summarize it. Also your own realization on the Harinam, so it's so nice, Prabhuji. Thank you. Always you mention that. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. So if there is no further question or point of discussion, so we'll all together will thank Prabhuji. हम सब मिलके प्रभु जी का